Hello, everyone. Hi. So, may we begin with the session? In the words of the father of India's Green Revolution, M.S. Swaminathan, if agriculture fails, everything else will fail. At the outset, I, Surbhi Sharma, wish you all a very good afternoon. Today, we are present here in this online meeting to attend a workshop of profound importance. That is, the National Workshop on the Agriculture of India, its growth and prospects, conducted by the Department of Economics at the Bhopal School of Social Sciences. Well, it is an honor for me to introduce to you all the guest speaker for today's workshop, Mr. Kshitij Mahendra, the senior consultant at the Department of Horticulture, Satpura Bhavan, Bhopal. Respected Sir has completed his graduation in Bachelor of Commerce from Devi Ahilya University, Indore, in the year 2008. MBA from IILM Gurgaon in Marketing and International Business in the year 2010, and currently working as a senior consultant at the Department of Horticulture, Bhopal. Sir also possesses practical knowledge in subjects like empathy mapping, value map, MVP, UCD canvas, user research, wireframes, prototyping, agile product management, digital marketing, and digital product management. Respected Sir has been an experienced marketing leader with 11 years of work experience in roles across founder, marketing manager, market researcher, and research analyst, and dealt with many agriculture projects of the government of Madhya Pradesh. Sir also possesses 6 years of rich B2B client experience across founders CEO, 2 years of experience as a marketing manager in an advertising agency, 2 years of experience as a market researcher delivering qualitative and quantitative research data. His professional works include being the founder and CEO at Kshitij Advertising and Events, Bhopal and Delhi, from August 2015 to December 2020. Marketing head at Marketing Manager at Shri Ram Communications, Bhopal and Raipur, October 2013 and August 2015. Market Research Manager and Market Research Analyst at Innovative Research Service India Private Limited from Mumbai in September 2011 to October 2013. Research Analyst at BMR Advisors, Gurgaon from August 2010 to September 2011. Dear Sir, we are highly delighted by your presence amidst us in this meeting today and accord a very cordial and genial welcome to you. And now, without taking much time, may I very warmly request Mr. Kshitij Mahendra to please commence with our today's workshop. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you so much. I miss your name because it's showing location on the screen. So yeah, thank you so much for my Sir, I brief am Surbhi introduction. Sharma. Yeah, Swati, right? Okay. So thank you, Swati. So, Uh, Surbhi Sharma. Surbi. Okay, sorry. Yeah, thank you, Surbi. Um, as you all know, basically where I'm coming from. So just I'll have a brief understanding about the audience which we have today on the session. Uh, just any one of you, or you can explain which mostly which are from the students are from which segment and what they are actually doing currently. So, we have students mostly and majorly from the economics background. Okay. Yes, sir. BA students, economics honors. Mhm. All right. Hmm. So let's understand basically what agriculture is and the agriculture scenario in India.
and what could be the prospects in the downline, and what we were before. So, anyone knows? Just let me know what is agriculture basically. Anyone? What do you understand by agriculture? So we will try to make this interactive, so that you can also ask questions in between also. So yeah, just let me know what agriculture is. Anyone? Anything like whatever you understand by the word agriculture, or you have seen, you have heard this many of the times, because India is one of the agriculture based economy, and you all are from the economics background, so you must know what agriculture is. So the science of farming. Yeah, right. Sir, can I say? Yeah, please go ahead. Sir, basically, agriculture is a practice of cultivating crops and food, fibers, and other products. Hmm. Correct. Okay. Sir, agriculture So is made of two words. mhm. Sir, agriculture Yes, is Saurabh. made of two words, sir. Agri and culture. Agri means sowing greenery, and culture means practicing something for a long time. So it is basically of harvesting, sowing, and plugging all that. That all includes Right. agriculture. Hmm. Correct. Yeah. So agriculture basically, as you all already mentioned, agriculture is a combination of two words. Culture is basically to for a cultivation, any kind of cultivation, and agri is basically soil. So whatever the cultivation or the production we have through the soil is basically comes under agriculture. So agriculture also consists of some of the allied sectors. In agriculture, there are horticulture, dairy, and fisheries and meat. These are some of the products which comes under the agriculture. So humans are basically what kind of creature they are. Depends on the other फूड सोर्सेस. हमें अपनी जितनी भी कंजम्पशन है उसको कंप्लीट करने के लिए टू सस्टेन आवर लाइफ we need some kind of food, and we depend on other forms of agriculture. Could be horticulture, could be there, dairy production could be there, meat and fisheries could be there. So let's understand what is agriculture, what is horticulture, dairy products, and the also the allied sectors. So agriculture basically consists of all those kind of crops which are majorly जिसको हम हिंदी में मोटे अनाज बेसिकली बोलते हैं, लाइक राइस हो गया, wheat है, देर आर pulses, millets, those crops which can be stored for a longer period of time, that comes under the agriculture sector. So this is basically and there are some other allied sectors, which is horticulture and dairy and fisheries. So horticulture, dairy and fisheries are those cultivations or the culture which can be comes under the cash crops. कैश क्रॉप्स क्या होती हैं कि वो क्रॉप जो कि हम ज्यादा टाइम तक या बहुत देर तक जिसको हम नहीं रख सकते, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं. एंड एंड हॉट एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंदर मोस्टली कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपके राइस हो गया, वीट है, मिलेट्स हैं, मेज है, पल्सेस हैं, ऑयल्स हैं, जितने भी टाइप के ऑयल हम खाते हैं, सोयाबीन हो गया, अदरवाइज मूंगफली हो गया. तो दे ऑल कम्स अंडर एग्रीकल्चर. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में मेजरली 5 क्रॉप्स आती हैं. 5 क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर, एंड ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं. और डेयरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो दूध से बनते हैं, बेसिकली दूध जो हम मोस्टली काऊ, बफेलो या से कंज्यूम निकाला जाता है. और उसके अलावा होता है फिश और मीट. फिश और मीट के बारे में आपको पता होगा. तो ये बेसिकली मेजर सेक्टर हैं. और इसके साथ साथ एक चीज इसमें और जुड़ती है जिसको हम फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं. तो फूड प्रोसेसिंग आजकल मैं इसमें एक एड ऑन करूंगा, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत तेजी से कर रहा है. और फूड प्रोसेसिंग में अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं. ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग में प्लस अदर काइंड ऑफ प्रोसेसिंग में जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं,
बिकॉज वो एक बहुत जरूरी पार्ट है हमारे लाइफ का। प्रोसेसिंग बेसिकली ये होती है कि किसी भी क्रॉप को ज्यादा टाइम तक हम कैसे रख सकते हैं। प्रोसेस, किसी भी क्रॉप को उसको प्रोसेस, तो दैट कुड बी फ्रॉम क्रॉप। सर अच्छा। मेज। नहीं नहीं, मिलेट्स में मेज एक्चुअली एग्रीकल्चर क्रॉप है। मिलेट्स में जो आता है आपका ज्वार, बाजरा और कोदो कुटकी। कोदो कुटकी का अगर आपने किसी ने नाम नहीं सुना है तो कोदो कुटकी एक क्रॉप है जो कि चावल जैसा होता है, बहुत छोटा दाना होता है उसका। मध्य प्रदेश में जो होता है वो छोटा दाना होता है, साउथ में होता है उसका दाना थोड़ा बड़ा होता है, छत्तीसगढ़ में भी जो दाना होता है उसका थोड़ा बड़ा होता है। तो जैसा कि नेशनल मार्केट में भी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मध्य प्रदेश उसमें वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है जो कि कोदो कुटकी प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश आपका पल्सेस में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। अगर आपको नॉलेज होगा तो गाडरवाड़ा और जो पिपरिया का बेल्ट है होशंगाबाद साइड का, दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड। मध्य प्रदेश में की दालें सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज ओडीओपी जो कि है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने एक स्कीम बनाई हुई है जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का कोई जो पिक प्रोडक्ट होता है उसको लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो मध्य प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग फोकस प्रोडक्ट्स हैं और उनको लेकर के पॉलिसीज हैं, उनको लेकर के हमारी काफी सारी स्कीम्स हैं और फार्मर्स को उसी तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से बेसिकली जितने यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड in that scenario also we will I'll share a PPT, like presentation है। so sharing allowed नहीं है। I'm not just a second।
Hello. Yeah. Is my screen is visible? Yes, sir. Okay. Thank you. ठीक है. जैसा कि मैं बता रहा था, India का global scenario, if we look after the global scenario of India, we are the topmost country for pulses production. So most of the pulses, basically तुअर दाल जो होती है, पीली वाली दाल हम जो खाते हैं, उसमें हम लीडिंग कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में. और सबसे ज्यादा हम वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसका करीब 25.44% शेयर वर्ल्ड में हमारा इंडिया से जाता है. और ये जान के यू विल बी हैप्पी, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे अच्छा उसकी. और सेकंड में अगर हम देखें तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन फॉर व्हीट कल्टीवेशन इन इंडिया, फॉलोड बाय राइस, प्राइमरी वेजिटेबल्स एंड प्राइमरी फ्रूट्स. जिसका मैं बोल रहा था कि ये तो इंडिया सिनेरियो हुआ. इंडिया में हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, एंड दोज पल्सेस आर cultivated mostly in Madhya Pradesh. So whatever the production is share in India and in the world is coming from the Madhya Pradesh states itself. So Madhya Pradesh is the largest producer of pulses, followed by wheat. We produce the wheat also, followed by the total other food grains and oil seeds, maize and bajra. Yeah, and this is more in context of Madhya Pradesh basically. So we are the largest producer of pulses, and there we share the 32% of total national produce, including we are the second largest producer of horticulture crops. As I already mentioned, horticulture crops consist of those crops which are the cash crops basically. Cash crops में आपका 5 crops आ जाती हैं. और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, एंड वी आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क आफ्टर यूपी एंड महाराष्ट्र. We are the third largest in the milk production also. And including all these things, most of the productions are in abundant. So basically होता ये भी है कि बहुत सा प्रोडक्शन तो वेस्टेज में भी जाता है. तो हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं मध्य प्रदेश को लेकर के, या इंडिया में भी अगर हम बात करें तो मेजर क्रॉप्स में जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोसेसिंग में बहुत कम जाता है. क्योंकि जो हम मोस्टली देखते हैं, अगर हम गेहूं की बात करें या वी टॉक अबाउट वीट, मेज, राइस, हम डायरेक्ट कंज्यूम तो करते हैं, साथ ही साथ इनको प्रोसेस करके भी आगे बेचा जा सकता है. तो प्रोसेस करने के बाद इनकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो लाइफ बढ़ जाती है तो हम इसको ज्यादा ड्यूरेशन तक रख सकते हैं, दूसरी कंट्रीज में भेज सकते हैं, इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है मार्केट में. तो उस चीज को लेकर के मिनिस्ट्री भी बहुत ज्यादा कंसर्न है, और उसमें बहुत ज्यादा फोकस होता है कि हम कैसे उस जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, या हमारे कल्टीवेशन के टाइम पे जो लॉसेस हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए कैसे उसको प्रोसेस में लाया जा सकता है. तो वो बहुत ज्यादा फोकस रहता है. और हॉर्टिकल्चर क्रॉप, या जो कि कैश क्रॉप्स बेसिकली कहलाती हैं, जिसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है. जैसे अब अगर मैं बात करूं कि हम फर्स्ट रैंकिंग करते हैं ऑरेंज, स्पाइसेस, गार्लिक, जिंजर, ग्राम और टोटल पल्सेस में. तब ऑरेंज है, ऑरेंज एक बार टूटने के बाद ज्यादा ज्यादा कितना चल जाएगा, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन. तो उसमें भी ग्रेडिंग होती है. जो अच्छी ग्रेड का होता है दैट वुड बी एक्सपोर्टेड, अदर वुड बी कंज्यूम्ड बाय locally or the nationally or in the state level. तो बाकी अदर ग्रेड का रहता है दैट इज मोस्टली यूज फॉर द प्रोसेसिंग पर्पसेस. सेम वे में सेकंड रैंकिंग में वी आर इनटू सोयाबीन, व्हीट, मेज, सिट्रस फ्रूट्स आर बेसिकली जो नींबू हम लोग यूज करते हैं. अनियन एंड फ्लावर्स में वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. एंड ऑयल सीड्स, चिली, कोरिएंडर, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, एंड मिल्क में वी आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. So this is basically the area and production data. If I talk about the horticulture, mostly horticulture crops,
We had in last 8 to 9 years, we have a 23% of growth, particularly in the production area. So let's not stick much into the slide. Yeah. And if I talk about the export from the Madhya Pradesh, we are the again in last 2 years we have a growth in agri exports around 60%, and in total wheat export was 90%. तो if we check, हम लोग बहुत ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होती जा रही है, चीजें अब मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन टू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हम लोग कम एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, दैट इज द मेन कंसर्न। बिकॉज ह्यूमन की जो बेसिक 3 नेसेसिटीज होती हैं इकोनॉमिक्स में, जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है, रोटी कपड़ा मकान। तो फूड, clothing plus आपका shelter, these are the three basic necessities. After that everything will comes under the comfort or not essential things, right? So what we focus is as increasing in the population, हम लोग का कोशिश यही रहता है कि किस तरीके से कम एरिया में मैक्सिमम कल्टीवेशन हम निकाल सके। तो मैक्सिमम कल्टीवेशन के लिए हमको ऐसी टेक्नोलॉजीज या हमको ऐसे यूरियाज एसिड्स वगैरह, हम उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें डाल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारे हार्मफुल जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं या इंसेक्ट साइट्स होते हैं, वो भी क्रॉप को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। तो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए हमको बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज करनी पड़ती हैं, और क्रॉप की कल्टीवेशन कम एरिया में मैक्सिमम करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, दैट कुड बी मैनेज बाय द मिनिस्ट्रीज। और उसको बेस लेते हुए हम लोग ये देखते हैं कि हमारा ईयर ऑन ईयर किस तरीके से या कितना परसेंट में ग्रोथ हो रहा है, एरिया वाइज भी, इंक्लूडिंग एरिया वाइज प्रोडक्शन भी हम लोग कितना ग्रोथ कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो हमने लास्ट 2 साल में करीब एग्री एक्सपोर्ट में 60% की ग्रोथ करी है, और टोटल वीट एक्सपोर्ट्स में 90% की ग्रोथ करी है। सेम वे में अगर मैं बात करूं तो पहले भी बताया मैंने, ये मिल्क प्रोडक्शन में वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। और हेलो, कौन सा मिसिंग है दिखा? मिल्क में भी मोस्टली ये होता है, या मिल्क में भी मोस्टली ये होता है कि हमारा बहुत सारा जो प्रोडक्शन होता है, या तो मिल्क हम लोग बाहर दूसरे स्टेट्स को दे देते हैं, या फिर हम लोग लोकली भी बहुत कम कंज्यूम हो पाता है। तो मिल्क प्रोडक्शन में भी प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। प्रोसेस प्रोडक्ट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर हम मिल्क का पाउडर बनाते हैं, या मिल्क के हम टेट्रा पैकेट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या हम उसको लोकल नेशनल लेवल पे आगे बेच सकते हैं, जिसकी लाइफ काफी बढ़ जाती है, 3 महीने से 6 महीने तक उसकी लाइफ हो जाती है। उसमें अलग कुछ फूड टेक्नोलॉजी की भी साइंस लगता है, और उससे हम इसकी कंजम्पशन भी बढ़ा, सॉरी, इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ उस प्रोडक्शन को हम वाइडर रेंज पे अपना मार्केट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली कि मध्य प्रदेश का क्या सिनेरियो है, मध्य प्रदेश की क्या ज्योग्राफी है। सो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। यूपी के बाद मध्य प्रदेश एक बहुत एक बड़ा स्टेट है। 82 मिलियन अराउंड के आसपास उसकी पॉपुलेशन है, और मध्य प्रदेश जिसमें नाम में ही ऐसा है कि मध्य प्रदेश है, तो वो सेंटर स्टेट कहलाता है। इसके साथ बहुत सारी बाउंड्रीज लगी हुई है दूसरे स्टेट्स की। तो वी आर शेयरिंग other state boundaries, agriculture land, और transportation वगैरह is also very easy. Electricity power generation हमारे पास बहुत अच्छा है। Industrial areas we have really very good. इंडस्ट्रियल एरिया की अगर मैं आगे बात करूं तो इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे पास फूड पार्क्स हैं। फूड पार्क्स बेसिकली क्या होता है कि एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए क्लस्टर्स हैं, और 8 ऐसे मेगा फूड पार्क हैं, जहाँ पे अलग अलग टाइप की डिफरेंट इंडस्ट्रीज वहाँ पर डेवलप करके प्रोसेसिंग पे प्लस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रॉप्स या हॉर्टिकल्चर क्रॉप या अदर अलाइड क्रॉप्स पे काम करती हैं। वैसे ही एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं हमारे पास, 5 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर हैं जो कि गवर्नमेंट ने डेवलप किए हुए हैं। वैसे ही 2 मेगा फूड पार्क्स हैं, और एक लॉजिस्टिक पार्क है। लॉजिस्टिक पार्क इज बेसिकली यूज फॉर द लॉजिस्टिक पर्पस।
एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, या कोई अलग नेशनल लेवल पे अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना है, तो दैट इज बीइंग यूज्ड बाय लॉजिस्टिक पार्क्स. एंड मध्य प्रदेश इज, एज आई ऑलरेडी मेंशन, रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. एयर कनेक्टिविटी हमारे पास है, इंदौर है, भोपाल है, और इसके अलावा हमारे जो कार्गो शिप्स होते हैं, ये तो आपके डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो गई. इसके अलावा कार्गो जो फ्लाइट्स होती हैं, वो कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश से बहुत अच्छी है. ट्रेन कनेक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं. 7 इनलैंड कंटेनर डेपोर्ट है हमारे पास, जिसमें मेजर इंदौर में है एक, और एक सेज इंदौर में है. इंदौर में ही दो मेजर इंपोर्ट कंटेनर हैं, और एक हमारा मंडी द्वीप में है. तो ऐसे करके हमारे करीब 7 मेजर इनलैंड कंटेनर डेपोर्ट्स हैं, जहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट माल करते हैं. एक्सपोर्ट करते हैं इन द सेंस कि वहाँ से जो भी कमोडिटी, एग्रीकल्चर कमोडिटी या फिर दूसरी कमोडिटीज, वो वहाँ से दूसरे पोर्ट पे जाती है. जैसे बॉम्बे हो गया या कलकत्ता साइड हो गया, तो वो बेसिकली यहाँ पे एज अ मीडिएटर काम करते हैं. अच्छा, यहाँ पे कुछ क्रॉप्स ली हैं. कुछ क्रॉप्स हैं जिसका बाइफर डिटेलिंग है कि हम लोग किस क्रॉप में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, और मार्केट में उसका प्रोसेसिंग में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं. लाइकवाइज अगर मैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करूँ, तो एग्रीकल्चर में मिलेट्स जो एक बहुत अच्छा सेक्टर है. तो मिलेट्स में मिलेट्स की कुकीज वगैरह हो गई, या मिलेट्स का पाउडर हो गया, या मिलेट्स के प्री मिक्सेस वगैरह बनते हैं. तो वो हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, जिसको हम लोग उस वे में आगे फॉरवर्ड ले जा सकते हैं. ऑरेंजेस की अगर बात करें, तो ऑरेंजेस का जो बेल्ट है हमारा मध्य प्रदेश में, आगरमालवा, छिंदवाड़ा एंड राजगढ़, ये बहुत अच्छा बेल्ट है. और यहाँ पे अराउंड 23.52 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हम लोग मध्य प्रदेश में करते हैं. उसके अलावा गुआवा, गुआवा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है. गुआवा का प्रोसेसिंग में जूस बनता है, या नेक्टर बनता है, जेलीज बनती हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्फेक्शनरीज, कैंडीज वगैरह, ये सारी चीजें रहती है. बनाना, बनाना इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश. और खंडवा, बुरहानपुर, धार, परवानी जो बेल्ट है, यहाँ से हम लोग बहुत एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. अच्छा, बनाना के बारे में बताना चाहूंगा. वर्ल्ड बनाना, बिकॉज बनाना हॉर्टिकल्चर क्रॉप है. और बनाना का सिर्फ फ्रूट ही नहीं, उसके साथ साथ जो उसका पत्ते होते हैं, और उसका तना जो होता है, रूट जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली दैट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर कपड़ा बनाने के काम आता है. उससे हम रेशे निकाल के कपड़ा भी बना रहे हैं. साथ ही साथ कुछ उसके जो क्रॉप होती है, बेसिकली क्रॉप में हम लोग उसका पल्प निकलता है, जो पल्प को एज अ खाद की तरह हम लोग उसको यूज करते हैं. तो बनाना इज वन ऑफ कंप्लीट फ्रूट, फ्रूट इंक्लूडिंग द प्लांट, इज वेरी यूजफुल, जो कि अभी बुरहानपुर में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, और वहां से दुबई, यूएस और यूए हम लोग काफी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. टोमेटो, टोमेटो की बात करें, मध्य प्रदेश में 11 जिलों में टोमेटो होता है. और टोमेटो हमारे यहाँ मोस्टली एक्सपोर्ट क्वालिटी भी जाता है, और टोमेटो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी होता है. जैसे कि मैंने कुछ बताया कि हमारे फूड क्लस्टर्स वगैरह हैं, जहाँ पे इंदौर में, जैसे कि अगर पीतमपुर एरिया है, या दूसरा एरिया है, टोमेटो बनाने वाली केचप कंपनीज है, मैकेन है, या इस तरीके की जो कंपनीज हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे टोमेटोज बहुत वाइड रेंज में हमारे मध्य प्रदेश में होता है. और इसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टोमेटो एक ऐसी चीज़ है जो कि थ्रू आउट द ईयर होता है. और अभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इतना अच्छा हो चुका है, और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ रही है, कि हम टोमेटो का प्रोडक्शन 6 से 8 महीने तक हम कर सकते हैं. और उसका कल्टीवेशन के साथ साथ उसका प्रोसेसिंग भी बहुत काम आती है. और साथ ही साथ दैट प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड टोमेटोज कैन बी एक्सपोर्टेड. एक्सपोर्ट क्वालिटीज का भी हम लोग मध्य प्रदेश में कल्टीवेशन करके प्रोसेसिंग कर रहे हैं. ग्रीन पीस का बेल्ट हमारा जबलपुर और देवास, उज्जैन, नरसिंहपुर एरिया है बेसिकली. तो फ्रोजन पीस बहुत ज्यादा जाती है. और एक जबलपुरिया मटर के नाम से वी हैव अ गवर्नमेंट ब्रांड दैट इज बीन प्रमोटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट is recognized as a national level. And we have some clusters over there in Jabalpur. Those clusters, they work on the processing of the peas. And after this, we have garlic. Yeah. So
we are the leading state in garlic production, garlic spices production. Basically, in India, Madhya Pradesh is the largest producer of spices, and in that category, garlic is one of them. And जो हमारे यहाँ garlic होता है, that is a very high quality garlic. गार्लिक बेसिकली गार्लिक एमएम से जाता है मार्केट में। आई मीन उनके जो साइज होते हैं गार्लिक के, उसके हिसाब से मार्केट में वो आगे बिकता है। तो गार्लिक भी हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी का डायरेक्ट जो क्रॉप है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ गार्लिक की प्रोसेसिंग भी करते हैं। गार्लिक का पेस्ट हो गया या गार्लिक फ्लेक्स बनाना है, गार्लिक का पाउडर है, गार्लिक एसेंशियल ऑयल इज बीन वन ऑफ द मेजर मेजर प्रोडक्ट विच इज बीन डिमांडेड इन मैनी ऑफ द अदर कंट्रीज। और वो लकीली इंडिया में बहुत अच्छा उसका स्कोप है, मार्केट भी है, और धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। तो गार्लिक में हम मध्य प्रदेश एक वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। चिली, या चिली जो है, अगर चिली भी हम लोग जैसा कि मैंने बताया स्पाइसेस में हम लीडिंग है। इसमें गार्लिक आता है, चिली भी आता है। चिली खरगोन में जो है एक मंडी है जिसका नाम है बेड़िया मंडी। बेड़िया मंडी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मंडी इन वर्ल्ड, जहाँ पे पूरे इंडिया से और इनफैक्ट अदर कंट्रीज से अभी बहुत कम हो गए, बट या देयर आर पीपल हु प्रोडक्ट हु परचेजेस फ्रॉम द बेड़िया मंडी। एक गुंटूर में है आंध्र प्रदेश में, और सेकंड लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश की खरगोन में बेड़िया मंडी। तो मिर्ची की भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं। एवरी काइंड ऑफ चिली इज बीन कंज्यूम्ड बाय अस, चाहे मिर्ची का वो जो हम कहते हैं उसको टंटल हो, या मिर्ची के बीज हो, मिर्ची का एवरीथिंग विल बी कंज्यूम। और मिर्ची की प्रोसेसिंग भी हमारे पास बहुत अच्छी है। मिर्ची का ग्रीन चिली पाउडर, ग्रीन चिली पेस्ट, ग्रीन चिली विनेगर, all these things, sorry, yeah, green chili vinegar, red chili powder. These are one of the things which can be processed from the chili, and we are one of the largest and leading producer of chili in India. कोरिएंडर में भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोरिएंडर, हालांकि हम लोग स्पाइसेस में कोरिएंडर भी एक हमारा जो क्रॉप है जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। और या दीज आर द सम मेजर क्रॉप्स। इसके अलावा और भी क्रॉप्स हैं, जैसे सीताफल, कस्टर्ड एप्पल है। मध्य प्रदेश कस्टर्ड एप्पल में भी बहुत अच्छा करता है। ये इतना काम का नहीं है हम लोगों का, ये बेसिकली अपॉर्चुनिटीज हैं मध्य प्रदेश में। मिल्क के बारे में मैंने बता ही दिया है कि मोस्टली जो मिल्क है वो मध्य प्रदेश से दूसरे स्टेट्स में भी जाता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना हो गया, यूपी है, राजस्थान है, दिल्ली इज बीइंग यूज्ड। और मध्य प्रदेश में जो भी प्रोडक्शन होता है मिल्क का, these are some of the processing and value addition logistic infrastructures. Okay. कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, बैक एंड सब्सिडीज। बेसिकली गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, गवर्नमेंट जब भी किसी गवर्नमेंट जब भी किसी स्कीम पे आती है, या गवर्नमेंट को कभी भी कोई प्रमोट करना होता है फार्मर्स के लिए या फिर एंटरप्राइजेस के लिए, तो वो स्कीम के थ्रू उसको करता है, सब्सिडी के थ्रू करता है। तो सब्सिडी बेसिकली क्या होती है? सब्सिडी ग्रांट होती है एक तरीके से, कि आप किसी काम को करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए आपको पूरा पैसा नहीं देना है। 100% में से 60% गवर्नमेंट दे देगी, 40% सिर्फ आपको देना है। तो ये बेसिकली ग्रांट्स होती हैं, सब में अलग अलग होती है। कहीं 40% होती है, कहीं 60% होती है, कहीं 30% रहता है, कहीं 35% रहता है, डिपेंडिंग ऑन क्रॉप टू क्रॉप। गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स होती हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट करती हैं। तो जस्ट एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें वो ग्रांट के थ्रू आपको हेल्प करती हैं। और वैसी ही कुछ ग्रांट्स हैं जो कि, देखिए, ग्रांट्स भी ना अलग अलग दो टाइप्स की होती हैं। एक स्टेट लेवल पे होती है, एक सेंट्रल लेवल पे होती है। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री जब भी कोई ग्रांट रिलीज करती है वो पूरे इंडिया के लिए होती है। स्टेट अगर कोई ग्रांट रिलीज करती है तो वो पर्टिकुलरली स्टेट्स के लिए रहती है।
फार्मर्स जितने होते हैं उनके एसोसिएशन बने हुए हैं। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि एसोसिएशन कैसे काम करते हैं। बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं। एक एफपीओ, जिसको एफपीओ या एफपीसी बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एक एफपीओ में मिनिमम 300 फार्मर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। बेसिकली एफपीओ या एफपीसी इसलिए बनाया जाता है ताकि एक सिंगल क्लस्टर में काम किया जा सके। इंडियन जो फार्मर्स या इंडियन एग्रीकल्चर सिनेरियो है दैट इज वेरी क्लटर्ड, कि कोई एक फार्मर है 5 एकड़ में ही खेती कर रहा है तो उसको उतना फायदा नहीं मिल पाता है, या 3 एकड़ में कर रहा है, 2 एकड़ में कर रहा है, ज्यादा उसको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो उस चीज को फोकस रखते हुए एक एफपीसी बनाई जाती है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 300 से मिनिमम 300 से ज्यादा, जैसे 500 गए, 600, 1000, 1000, मोर देन 1000 फार्मर्स, दे कल्टीवेट अ सिंगल काइंड ऑफ क्रॉप। जैसे कि 1000 फार्मर्स अगर आलू उगा रहा है तो वो उसको उस क्रॉप का एक प्रॉपर अच्छे से मार्केट मिलता है, साथ ही साथ उस क्रॉप का अच्छे से रेट मिलता है। इसलिए एफपीओज या एफपीसीज बनाए जाते हैं, जो कि प्राइवेट लिमिटेड जो एसोसिएशन है, कंपनीज है, उसके अंदर ही वो लोग रजिस्टर होते हैं। कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में बेसिकली रजिस्टर होते हैं। तो उन एसोसिएशंस को, एफपीओस को या इंडिविजुअल फार्मर्स को बेनिफिट देने के लिए अलग अलग स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं। जैसे उसमें से ही अगर मैं कुछ बात करूं तो बैक एंड सब्सिडी है 60% ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, किसी भी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 60% की प्लांट एंड मशीनरी पे सब्सिडी, बैक एंड सब्सिडी है। अच्छा, मंडी बोर्ड, एक मैंने आपको शायद बताया था, मंडी मंडी बोर्ड होती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं आपके जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, उसको एक जगह एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेल करने के लिए वो लोग हेल्प करती हैं। तो मंडी बोर्ड में भी लाइसेंसिंग होती हैं, उस लाइसेंस में भी फार्मर्स को हम हेल्प करते हैं कि उसको हम कैसे एक्सटेंड कर सकें या उसमें हम कैसे लाइसेंसिंग वगैरह दे सकें। और ये अदर कुछ इसकी स्कीम्स हैं। स्कीम्स के बारे में बहुत सारी हैं, अगर किसी को और जानना हो डिटेल में तो आई शेयर अलग से, एक बार मैं इसको भी शेयर कर दूंगा। अगेन ये फूड प्रोसेसिंग की भी स्कीम है। फूड प्रोसेसिंग के बारे में भी अगर किसी को और डिटेलिंग में जानना या समझना होगा तो आई शेयर दिस विद यू ऑल। So these are the major players in Madhya Pradesh. ITC है, पार्ले एग्रो है, डाबर है, ब्रिटानिया है, डायमंड, बालाजी, टॉप एंड टाउन। दीज आर सम ऑफ द मेजर प्लेयर्स जो कि प्रोसेसिंग में काम करते हैं। कोको कोला है। हमारे यहाँ आलू बहुत अच्छा होता है। आलू जो है, पोटैटो आर इज वन ऑफ द प्रोसेस क्वालिटी वी हैव। कोको कोला के चिप्स जो लेज वगैरह आते हैं पेप्सी के, that is been cultivated on a contractual basis and is produced by some of the other companies also. Balaji Wafers, they also have this potato factories in Indore. Yeah, so this is basically our ministry and all. Let me stop this. अगर किसी को कुछ सवाल हो या किसी का कुछ क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क मी। बेसिकली दिस, ये बहुत लेमन में मैंने बताया है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर क्या है, मध्य प्रदेश वहाँ कहाँ स्टैंड करता है, नेशनल हमारा क्या प्रोड्यूस है, हम मैक्सिमम कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। अब स्टेट वाइज सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, हर स्टेट का एक अलग क्रॉप होता है। जैसे अगर मैं इधर ऊपर एक्सट्रीम में चला जाऊँ, जम्मू साइड चला जाऊँ, तो वहाँ पे एप्पल बहुत अच्छा होता है। और यूपी में जाऊँ या बिहार में देखा जाए तो मखाना वहाँ बहुत अच्छा होता है, लीची बहुत अच्छा होता है ना। साउथ में राइस बहुत अच्छा होता है, वेस्ट बंगाल में राइस बहुत अच्छा होता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट एंड देयर क्लाइमेटिकल कंडीशन। वहाँ की क्रॉप अलग अलग हो सकती है। तो बेसिकली मध्य प्रदेश जो है वो कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में लीडिंग है। ऑल्सो फिशरीज और मीट में हमारे यहाँ बहुत कम कल्टीवेशन है, इतना ज़्यादा नहीं होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास इतना वो वाइड वाटर एरिया नहीं है। बेसिकली उसके लिए हमको ज़्यादा बड़ी नदियाँ या समुद्र वगैरह लगते हैं, तो वो हमारे यहाँ पास बहुत अभी इतना अबंडेंस में नहीं है। तो रेस्ट अगर किसी का कुछ कोई डाउट हो या इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क। हम थोड़ा सा टाइम उसके लिए रखते हैं।
Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah. So if anyone is having any kind of doubt related to the things which I have covered right now, or other than this also in the field of agriculture, uh, I'll try to, yeah, no one? Sir, I would like to. Yeah, yeah, please. So basically, this 2023, as it was so much in news that this year has been celebrated as the International Millets Year. So, sir, what are those possible initiatives and policies that government are undertaking? Because these millet crops are not very new to us. These are the things that used to be very prominent in old days, but now, due to passage of time, common people they are not much aware, and because with time it has been reduced the millet crops. So now, what are the government policies that are giving advantage to these crops so that these can be encouraged between the common people? Yeah, correct, correct. She, very well said. We already celebrated International Year of Millets, and there are lots of activities which has been done in last few years with the millets itself, and even the government and the private players they both are very much engaged to increase the millet production, also the processing under this. So. For this, government is having Ministry of Food Processing Industries (MOFPI). They have their scheme for millets basically. So if you have any kind of interest in millets processing plants, they offer you with a 35% of subsidy. Uh, for this, you can start your millet processing. Millet processing, any kind of cookies or premixes from the millets if you would be interested to prepare. For that, you can take a grant of 35% subsidy. Thank you so much, sir. Yeah. Any other questions or doubt if anyone has? Mhm. Good afternoon, sir. Yes, ma'am. I'm Dr. Jyoti Mathur, and I'm head Department of Economics. For the benefit of our PG students who have joined, I have Mhm. one question. Can you suggest them, like, what are the different areas in which they can go for research in horticulture, Okay. in agriculture, research and development? Hmm. Okay. Yeah. So, for particularly research, again, I would recommend to look for a processing itself. Also, there is a gap between, uh, this thing, the post-harvest losses are very much higher in agriculture also, in horticulture also, even in the dairy and the fisheries sector. So anything related to to understand the gap between and to minimize that the losses that could be a part of a very well part of a research. How that can be done. So there are many private players and the partners who will be coming in this sectors itself, and they are working rigorously because there is a very wide gap into this post-harvest losses, and also for the processing thing. Processing also is one of the a major area which can be taken as a research part, and obviously the crop would be depends on individual to individual whatever the crop they would be looking for. But in Madhya Pradesh, if I suggest millet could be one of the crop because not all the states are growing millets. Also wheat, rice, and in horticulture crops, spices are one of the major crops we have. Also in flowers, marigold and some other ornamental crops can be taken for our research purpose. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I think
we can wind up if anyone is having any kind of doubts or anything related to the agriculture sector. You can ask me. Uh, Even if you need any kind of assistance in kind of for preparing a research work, you can connect me like anytime. So I'll try to help you out with particularly data or on ground, the work which can be done. So that would help in the research for preparing the research. Sir, So, just a similar question to what I previously asked. You said a little about the millet processing industry. So, in what ways do you think that it will benefit the Indian economy, since it's the fastest growing economy during these days? So, how Uh, millets processing can contribute to its economic growth? Okay, yeah, thank you. Again, millets processing is already contributing to the economy. In last 2 years, basically, if we see, we have increase in the number of exports which will be doing from the millets itself, and also the raw product or even the processed product both. So I'll get you back with the data basically what the number of percentage we have had a growth and the share of exports which we share in the national wide also in the international market. Yeah. Because most of the some of the industries like in sorry countries like Dubai, USA, UK, they are in a very they are very much aware about the millets now these days, and they look for the products, and most of the the processed products comes from the India itself. So there are major players, so some of the big players, they are really working into the millet production processing sectors itself, and government is mostly promoting all the small like MSME manufacturing industries to produce the maximum number of not only the millets but other products also. So that could be used as a brand or as a product to be exported in other countries. Sir, also, if we shift the inclination of millets towards the health sector, then we can definitely know this thing. It is a matter of fact that millets, somewhere or the other, are good for pregnant ladies, pregnant women, and also the girl children, those who suffer blood, and those who are basically anemic. So, does the government look somewhere to build initiatives wherein they can create awareness and provide these opportunities to those who can benefit Yeah. out of it? Yes, yes. So government is for millets. If whatever the the focus for the millet by the Indian government is mostly towards the health sector side only. So wherever we'll be placing millet in could be in the national market, could be in the international market, that will be placed as a health product. Okay, sir. Thank you. Yeah, so in African countries, malnutrition, the kids or that is being consumed in African countries as a health benefits itself for the millets. Kshitij sir, am I audible? Yes, yes, sir, you're audible. Oh, thank you so much for taking such a lovely session. I also want to ask some questions on the behalf of my Yes, yes. students. There are lots Mhm. of times the debate going on. The portion of agriculture sector is keep declining in terms of GDP and in terms of overall population. So, what is your outlook and what is your stand on that? That like how we can reduce or try to increase the GDP portion what we are having today, and how can we work on the agriculture through which the agriculture will get benefited for the Indian economy as well as the state economy. अ, बहुत शॉर्ट में बोलूं तो सबसे बड़ा जो इशू है इस चीज को लेकर के कि हमारे यहाँ का जो यूथ है दे वो विलेजेस में आजकल रुकता नहीं है।
outside the ministry also, एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा होने लगा है. कुछ states, some of the states are really doing very good. Like if I talk about some of the states in south, and Maharashtra is doing good. तो मेजर कंसर्न यही रहता है कि कोई करना नहीं चाहता है, और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है. सो पीपल मोस्टली ट्राइंग टू स्टार्ट विथ ऑल काइंड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, बिल्डिंग्स बनाना या ग्रोथ इस तरीके से करना. सो एग्रीकल्चर का उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है कि हम उस एरिया को मैक्सिमम कैसे बढ़ाएं और यूथ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वहाँ पे रुक सकें. मतलब आप ही अगर हैं, जैसे आप लोग यूथ हैं, सारे एक अभी इकोनॉमिक्स से ही हैं, तो ये इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझते हैं. तो कल्टीवेशन और क्रॉप प्रोडक्शन में हमको बहुत आगे आना चाहिए, और उसको हम लोग को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए. तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन जिसमें हम जीडीपी ग्रोथ उसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं. Thank you, sir. Thank you. So, just one last question from my end. That since we are focusing so much on agriculture sector, promoting sustainability and everything in long run, but there is no false news that climate change is hitting the entire planet very badly. So, Right. if we talk about the long run, how is agriculture industry preparing itself? वेरी गुड क्वेश्चन. सो विल बी ट्राइंग टू गेट इनटू, जो कि दूसरे अदर कंट्रीज ने ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है. यूएस ने अडॉप्ट किया है, यूके ने अडॉप्ट किया है. ड्रोन टेक्नोलॉजी और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और हॉर्टिकल्चर प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी उसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है. बेसिकली रिमोट सेंसिंग एंड ड्रोन टेक्नोलॉजीज जो यूज होती हैं वो क्लाइमेट चेंजेस और क्लाइमेट किस तरीके से इम्पैक्ट करता है किस एरिया को, उस चीज पे काम करती है. सैटेलाइट बेस्ड होता है वो, और उसका एक कंप्लीट डेटा बनता है. और उस डेटा के बेस पे हम उस चीज को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट हाँ, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंट करने के साथ साथ उस कल्टीवेशन को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकें या उसका प्रोडक्शन ज्यादा कर सकें, उसमें हम लोग काम कर सकते हैं. तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी पे अभी बहुत ज्यादा काम हो रहा है. मध्य प्रदेश भी इसको अडॉप्ट करने के लिए अभी बहुत एग्रेसिव है, और मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल में हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे. गूगल इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है. गूगल टेक्नोलॉजी इज वर्किंग ऑन दिस. तो दूसरी कंट्रीज में ऑलरेडी है, यूएस में बहुत ज्यादा है ये, और इंडिया अभी उसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है. साउथ के कुछ स्टेट्स ने अडॉप्ट किया हुआ है. तो या Good afternoon, sir. I have also one query. प्लीज. या Actually, I have a question related to career opportunity. So, how can we work in agriculture sector if we need a career opportunity for us? आप पहली चीज तो कल्टीवेशन कर सकते हैं. अगर कल्टीवेशन आपको नहीं करना है तो जॉब अगर आप देखेंगे तो देखिए, जो दो चीजें हैं इसमें, देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स. वेदर कुड यू स्टार्ट विथ अ जॉब, और यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन बिजनेस. जॉब में अगर बात करूं तो देयर आर लॉट्स मेनी कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं. टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि काम करते हैं. और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री लेवल में कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कि एमपीपीएससी एंड व्यापम लेता है. उसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं. और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि प्रोसेसिंग में हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है. तो एग्रीकल्चर में अगर आपको करना है तो आप प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बिकॉज प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द थिंग जो कि फार्म गेट पे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू एकदम से बहुत बढ़ा देता है. फॉर एन एग्जाम्पल, एक टमाटर जो कि मैं रिटेल में अगर बात करूँ तो टमाटो विच आई परचेज फॉर 30-40 रुपीज kg, जो होलसेल में 5 रुपए, 10 रुपए या 15 रुपए किलो जाता है, उसकी अगर मैं प्रोसेस करके टोमेटो केचप बना देता हूँ तो दैट विल कॉस्ट मी 150-160 रुपीज. तो वो 30-40% का एक ग्रोथ है. तो वहाँ पे बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप लोग फोकस कर सकते हैं. इंक्लूडिंग मिलेट्स की बात करो, मिलेट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में. तो प्रोसेस्ड मिलेट्स कैन बी वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर the young students or even the entrepreneurs. So these are some of the sectors. और job करना है तो there are lots of private sectors, and for government there is a post which is called RHEO and RHEO.
रूरल एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं बेसिकली. सो दैट इज द एंट्री लेवल एग्जाम्स. वो दैट कैन बी कंडक्टेड बाय व्यापम एंड एसएससी. उसके अलावा आपका एमपीपीएससी या यूपीएससी से जो एग्जाम्स होते हैं दैट कवर्स विथ मोर एडिशनल डायरेक्टर पोस्ट लेवल पोजीशन. Okay, sir. Thank you very much. Yeah. Anything else, or we can wind this up? Yeah, Suji. I would How like to improve all. agriculture production? Sorry, sir. So I think I have received a question. Sir, how to improve agriculture produce naturally in desert or arid places where only single type of crops are grown? House of accounting. Agriculture produce naturally in desert. डेजर्ट्स में मोस्टली क्रॉप तो वैसे भी बहुत, अगर डेजर्ट आई मीन, अच्छा, डेजर्ट तो मोस्टली, अब डेजर्ट से आपका क्या मतलब है? रेत या रेगिस्तान वाली जगह पे अगर आप कुछ क्रॉप करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड क्रॉप्स होती हैं. देखिए, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो मेजर चीजें होती हैं दैट इज सनलाइट, वाटर एंड लैंड, soil basically. The soil could be different depending on the crop to crop. और डेजर्टेड लैंड में अगर आपको क्रॉपिंग करनी है तो उसके लिए पॉली हाउसेज, वेयर हाउसेज, बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं. तो वो हम लोग यूज करके वहाँ पे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. और नेचुरली बेसिकली उसके लिए भी, बिकॉज आई हर्ड इन सऊदी अरेबिया दे आर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इवन इन डेजर्ट. हाँ, सऊदी में हो रहा है. अगेन मैंने बताया कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है आपका, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी हो गई या फिर शेल्टर वाली टेक्नोलॉजी हो गई, उसमें हम लोग उसको कल्टीवेट कर सकते हैं ना. सिर्फ सऊदी में नहीं, इंडिया में, इनफैक्ट मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं. आलू की खेती है. आलू की खेती सिर्फ हवा और पानी से हम लोग कर रहे हैं. ग्वालियर में उसका अभी इनिशियली स्टार्ट हुआ है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मशरूम की खेती है, उसके अलावा दूसरी और अदर क्रॉप्स हैं जो कि बिना सॉइल के भी हम लोग उसको, टिश्यू कल्चर बेसिकली उसको कहते हैं कि टिश्यू कल्चर में उस क्रॉप को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं. तो टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द सेगमेंट विच यू कैन गो फॉर द रिसर्च पार्ट. उसको डेप्थ में जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा. तो वो टेक्नोलॉजी भी हम लोग इनफैक्ट मध्य प्रदेश में भी यूज कर रहे हेलो सर. हैं. या हेलो हेलो. सर, एक या क्वेश्चन बताएंगे हाइड्रोपोनिक मेथड के बारे में. यू आर नॉट क्लियर. क्या पूछ रहे हो आप? हाइड्रोपोनिक मेथड. हाइड्रोपोनिक मेथड. जी सर, बिना बिना पानी और बिना मिट्टी के हम लोग किस तरह खेती करते हैं उसमें सैफरॉन की. उसके लिए मैं आपको अलग से कनेक्ट कर लीजिएगा. आप मुझे लोकेश सर से बात करके मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स भेज दूंगा, या आप मुझसे कॉल जी पे भी थैंक यू बात सर. कर सकते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. चाहे तो आप जी सर. विजिट भी कर सकते हैं. आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, वो प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं उसको. अच्छा, थैंक यू सर. So, with this, I would like to ask all the attendees here to switch on their cameras so that we can have a snapshot of the screen. Sure. I request the attendees, for whomsoever it is possible, to turn their screens on. I'm going to wait for next 2 minutes. Okay. So today, as we conclude this enlightening session, I am reminded of a quote by Thomas Jefferson. Agriculture is our wisest pursuit.
because it will in the end contribute most to real wealth, good morals, and happiness. It is with immense gratitude that I, Surbhi Sharma, on behalf of the Department of Economics at the Bhopal School of Social Sciences, extend my heartfelt thanks to Mr. Kshitij Mahendra for sharing his profound insights into the growth and prospects of Indian agriculture. Respected sir, through your expertise, we have gained a deeper understanding of the challenges and opportunities that shape the agriculture landscape of our nation, mostly of Madhya Pradesh. Your passion and dedication to this your passion and dedication to this vital sector must have surely illuminated pathways towards sustainable growth and prosperity. On behalf of the Department of Economics, I extend our sincere thanks to our respected Father Principal, Dr. John PJ, for always showing his constant support for conducting such commendable workshops for the student of BSSS. I would like to extend our heartfelt appreciation to our Head of Department, Dr. Jyoti Mathur, and Faculty in Charge, Mr. Lokesh Bhartiya, for conducting such an informative and valuable workshop for us. Your guidance and support have been instrumental in organizing this insightful session. Lastly, a sincere word of gratitude to our attentive student audience. Your active participation and engagement have made this session truly meaningful. Thank you once again to everyone involved for your invaluable contribution and unwavering commitment to excellence. Thank you so much. I request all the attendees of this session to kindly fill in the feedback form circulated in the chat box in the meeting itself in order to get the participation certificate for the workshop. Yeah, Thank you thank so you. much. Thank you, Suruchi. Thank you. It was a nice interacting with you. Thank you, sir. Thank you.